welcome to a very special episode of the Citizen Journalist Show. Whether it was the botched up surgeries in Chhattisgarh that took the lives of 13 women, or the 300 doctors accused of taking bribe, or the fact that thousands in our country remain with no access to doctors or hospital. In the next 30 minutes of the Citizen Journalist Show, reports that will expose the fractured healthcare system of our country. The video volunteer community correspondents spread across the country are sending reports on the healthcare facilities that remain unavailable to them. एक कंपाउंडर है हरिमोहन जी ड्यूटी करना नहीं चाहते। यहाँ में कोई हॉस्पिटल में रहता ही नहीं है और कोई भी मरीज चाहता है वो देख दाख के चला जाता है यहाँ से। सुविधा तो नहीं होती है, बस आते हैं तो मलहम पट्टी कर देते हैं। We'll start the show today with shocking reports that will show the fractured state of healthcare system in the country. Hospitals in shambles, nurses and doctors missing, and deep-rooted corruption. Our video volunteer community correspondents spread across the country are sending reports that will show how healthcare facilities remain unavailable to them. From the Nopada district of Odisha, Abhishek Kumar sends this report of how at least 15 villages in this area remain deprived of the basic right to health. हमारे देश के संविधान के तहत आर्टिकल 21 में दिए गए प्रावधान के अनुसार राइट टू हेल्थ एक फंडामेंटल राइट्स है। Injured and ailing have to travel several kilometers to access medicines or first aid. हॉस्पिटल अच्छे अच्छे है क्या? हॉस्पिटल ऊपर कितने खण गान लोग निर्भर करू छन? 10-12 खण गान। The primary health center remains locked, the doctors never show up, and thousands remain without health care. मैं अभिषेक कुमार दास गांव दर्लीपड़ा जिला नुआपड़ा उड़ीसा से इंडिया अनहर के लिए। Not too far from Nopada is Jagat Singhpur district. The community health center here is 120 years old. What remains of it is a broken down structure and rubble. But believe it or not, expectant mothers, ailing patients, critically injured are expected to be treated here. प्रथम होचे जो डॉक्टर ना घर नहीं द्वितीय डॉक्टर ना। The government-sanctioned land for the construction of a hospital has been encroached, the price of which is being paid by the people of this area. ମୁଁ ଅନୁପମା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର To Gareriapur village in Uttar Pradesh, where a health center building was constructed 5 years ago, but no doctors were hired. As a result, people have to travel 25 to 30 kilometers in case of a health emergency. Even for a vaccination, the mother will have to take her child to the city. स्वास्थ्य स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर एनएम नहीं आती हैं और यहाँ पर बहुत समस्या होती है। हमारे मासलपुर उप तहसील चिकित्सालय की स्थिति, जहां पे समय पर डॉक्टरों के नहीं पहुंचने की वजह से सरकार की इतनी सारी योजनाओं के चलते हुए भी वहां के लोगों को आज भी झोला छाप डॉक्टरों की शरण लेनी पड़ रही है। In Masalpur Government Hospital, there are not enough doctors or nursing staff. यहाँ में कोई हॉस्पिटल में रहता ही नहीं है और कोई भी मरीज चाहता है वो देख दाख के चला जाता है यहाँ से। The doctors remain absent from duty, the beds broken, wards absolutely empty. एक कंपाउंडर है हरिमोहन जी ड्यूटी करना नहीं चाहते। हरिमोहन आते हैं पल दो पल के लिए, बस छुट्टी गई। मैं अपनी मम्मी और बच्चे दिखाने आया। हम पहुंचे 8:15 बजे। कोई नहीं था तो लड़की थी बस बच्चे। Another state, but the story is the same. A healthcare center built in 2012 remained locked since its construction. 20 सितंबर 2012 में ये बना हुआ था और अभी भी उसमें ताला लगा हुआ है। Patients suffer even as no one is bothered about this health center that could have saved lives. आपकी लड़की अभी है कि नहीं है? नहीं, वो तो समाप्त हो गई। कब? परसों के दिन। बुध के दिन। आप लोगों को कोई आए नहीं है, गोली भी नहीं मिलता। The health center of Jairam Nagar in Chhattisgarh has no doctors on night duty. स्वास्थ्य मंत्री के आधार पे बताया जा रहा है कि हर उप स्वास्थ्य केंद्र में रात को डॉक्टर का रहना बहुत ज़रूरी है, मगर यहाँ पर देख रहे हैं कि डॉक्टर की लापरवाही से मरीजों को कितना परेशानी उठाना पड़ रहा है।
In the Khunti district of Jharkhand, there is an acute need of a proper healthcare center. The one that exists is a tiny room with broken walls and a roof that threatens to give way unannounced. सुविधा तो नहीं होती है, बस आते हैं तो मलहम पट्टी कर देते हैं, दवा देके भेज देते हैं. All right, open drains right next to a hospital. Well, if you have stories to share, you can write to us on IBN